Lesson 7, Home Sweet Home. Let's continue our exercise from page 78, and our today's topic is adverbs. We have already read about adverbs as they describe or tell us something more about the meaning of verbs. So adverbs are those words which explains or describe verbs. Then there are several kinds of adverbs like adverbs of time, adverbs of manner, adverbs of place, and adverbs of frequency. Let's read this sentence to know more about adverb. The man walked carefully into the room. The verb here is walked, chala, and the word carefully is adverb as it is telling us about the man and how he walked. Our question number 2 is pick out the adverbs in the following sentences and say whether the adverb tell us where, when, how or how often the action of the verb takes place. So first we'll pick out the adverbs in the sentences and then we'll tell that how adverbs are playing their role to tell us more about verbs. Our first sentence is he looked carefully at the little animal and decided it was not hurt. उसने एहतियात से छोटे जानवर को देखा और ये बताया या फैसला किया कि वो ज़ख्मी नहीं है. So the verb or action here is looked and carefully is adverb and it tells us how he looked. So word carefully हमें बता रहा है कि उसने कैसे छोटे जानवर को देखा. B. My friends are arriving tomorrow by bus. मेरे दोस्त कल बस के ज़रिए पहुंच रहे हैं या आ रहे हैं. And the adverb here is tomorrow as this word is telling us that when his or her friends will arrive. C. He ran here and there but could not find his brother. वो यहाँ वहाँ भागा लेकिन अपने भाई को ना ढूंढ सका. Here words here and there are adverbs और ये words हमें क्या बता रहे हैं कि वो कहाँ भागा. D. The carpenter has just finished making the table. बढ़ई ने या कारपेंटर ने बस अभी टेबल बनाने का काम ख़त्म किया है. So the word just is telling us that when that carpenter finished his work. E. The car went up the hill so very slowly that even the pedestrians overtook it. कार पहाड़ के ऊपर से इतनी आहिस्ता से गुजर रही थी कि पैदल चलने वाले भी उसे ओवरटेक कर रहे थे. Here the word slowly is telling that how the car went up the hill. F. Please come now or we shall miss the bus. बराए मेहरबानी अभी आओ वरना या हम बस को मिस कर देंगे. अगेन ये हमें बता रहा है कि कब आना है. G. She placed the clock above the photograph yesterday. So here the word yesterday is adverb and it is telling us when the photograph was placed by her. Question number 3 is add interesting adverbs to the following like for example march smartly. march का मतलब चलना and smartly this word add to the meaning of march like how someone march. So we'll add interesting adverbs to the following words in the same manner. A. Cough loudly ऊंची आवाज़ से cough करना या खांसी करना. B. Creep silently खामोशी से रेंगना. C. Leave abruptly फ़ौरन से चले जाना छोड़ देना. D. Stands easily आसानी से खड़े होना. E. Balance carefully एहतियात से तवाज़ुन रखना. F. Imitate perfectly अच्छे तरीके से कॉपी करना imitate करना. G. Punish severely सख्ती से पनिश करना सज़ा देना. H. Whisper quietly खामोशी से सरगोशी करना. So all the words which we have added here are playing the role of adverbs as they are describing the words or verbs given here. Moving on to the part D, question number 1. Here are some proverbs. Discuss what they mean and try to give examples to illustrate the proverbs and in what context they might be used. Here we have a number of proverbs and we'll start illustrating them or describing them one by one. So the first proverb is home is where the heart is. So your home will always be the place for which you feel the deepest affection no matter where you are. तो इस proverb या इस ज़र्ब मिसल का मतलब ये है कि आप उसी जगह को अपना घर महसूस करते हैं जहाँ
आप अफेक्शन फ़ील करते हैं, मोहब्बत फ़ील करते हैं, ख़ुद को कंफर्टेबल फ़ील करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो आपका घर हो। अगर कोई भी ऐसी जगह होती है वेयर यू फील द डीपेस्ट अफेक्शन, you feel at home. B. All's well that ends well. If the final result is good, the previous difficulties and failures are forgotten. What happens in the end is most important. So, whenever we are up to something or we do something, if the final result is good, अगर हमें कुछ अच्छा हासिल होता है, so we forget about the difficulties and failures we face. अगर हमारा रिज़ल्ट अच्छा आता है तो हम मुश्किलात को और नाकामियों को भूल जाते हैं। सी. ब्यूटी इज़ ओनली स्किन डीप. द इनर क्वालिटीज़ नॉट द आउटवर्ड अपीयरेंस शो द ट्रू नेचर ऑफ अ पर्सन. किसी भी शख्स की अंदरूनी खसूसियात उसकी इनर क्वालिटीज़ ही डिस्क्राइब करती हैं कि उसकी ट्रू नेचर क्या है, ना कि उसकी आउटवर्ड अपीयरेंस. हम किसी की ज़ाहरी शक्ल सूरत से अक्स नहीं कर सकते कि वो शख्स कैसा है. डी. एवरी डॉग हैज़ इट्स डे. एवरी पर्सन विल हैव सक्सेस और गुड फॉर्चून सम टाइम. हर शख्स कभी ना कभी किसी न किसी वक्त कामयाबी हासिल करेगा या अच्छी किस्मत पाएगा. अगर आज अच्छी किस्मत नहीं है या आज वो फेलियर्स फील कर रहा है, सो विल हैव सक्सेस और गुड फॉर्चून सम टाइम. ई. अ न्यू ब्रूम स्वीप्स क्लीन. A new person doing a job makes a lot of changes and does the job well. एक नया शख्स जब कोई काम शुरू करता है तो वो उसमें बहुत सी चेंजेस करता है, तब्दीलियाँ लाता है और उस काम को अच्छे तरीके से सर अंजाम देता है in order to prove himself or herself. F. It's easy to be wise after the event. It is easy to say what should have been done to avoid failure after the failure has happened. कुछ गलत हो जाने के बाद या किसी फेलियर के बाद कोई भी ये बता सकता है कि हमें क्या करना चाहिए था उस फेलियर से बचने के लिए, और इस तरह से लोग खुद को अक्लमंद साबित करने की कोशिश करते हैं. However, you can only be wise if you will tell the consequences first. G. First come, first served. The person who finishes something or arrives first has the best chance of success. वही शख्स कामयाबी हासिल कर सकता है या कामयाबी के ज़्यादा मौके हासिल कर सकता है जो अपना काम या कुछ भी वक्त पर ख़त्म करता है, जल्दी ख़त्म करता है, अपने मकसद तक जल्दी पहुंचने की कोशिश करता है. सो वी यूज़ ऑल ऑफ दिस प्रोवर्ब्स जब कभी हमें इनके लिए सूटेबल सिचुएशन महसूस होती है. दैट वॉज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.